हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज निकली हुई है धूप। इट्स बिन ग्लूमी एंड रेनी फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज नाउ। यहाँ पे ज़्यादा धूप निकलती नहीं है एंड नाउ दैट द सन इज़ आउट इट्स अ गुड डे टू गो आउट एंड एक्सप्लोर द सिटी। आज शाम को मेरी एक व्यूइंग भी है फॉर अ प्रॉपर्टी, तो आपको दिखाऊंगा व्यूइंग कैसे होती है। इन द मीन टाइम आई थॉट थोड़ा लंदन एक्सप्लोर करते हैं, लंदन के सेंट्रल लंदन के कुछ हॉट स्पॉट्स दिखाते हैं और बाकी थोड़ी टिप्स वगैरह भी बताते हैं लंदन के बारे में, पार्टी कहाँ करते हैं, घर में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, घर के सॉल्यूशंस क्या हैं। आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड डे। लेट्स सी हाउ इट गोस। लेट्स एक्सप्लोर लंदन। And welcome to our first location, which is Hyde Park. This is one of my most favorite places in London. हम weekends पे यहाँ पे आके कभी-कभी बैठते हैं. You can drink here, chill here. When it's sunny, it's really beautiful. People have their blankets. They cook food from home, bring it here. It's a beautiful place. It's a huge park. It has a cafe. It has a lake and everything. So let's explore Hyde Park. आई लव द पार्क कल्चर इन लंदन। बहुत ही पीसफुल है, अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अब यहाँ थोड़ी शांति है तो थोड़ा काम की बात करते हैं। अ लॉट ऑफ यू रीच्ड आउट टू मी एंड आस्क्ड मी अबाउट द अकोमोडेशन सीन, अ वीडियो अबाउट अकोमोडेशन, स्टूडेंट अकोमोडेशन। और जो वेबसाइट मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, इन सब में प्रॉब्लम ये है कि लंदन में टेनेंट्स हैव अ लॉट ऑफ राइट्स, और एज ए स्टूडेंट जब आप यहाँ पे आते हो तो आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो कल को अगर आप उठ के लैंडलॉर्ड को बोलो दैट आई डोंट वांट टू पे द रेंट, देयर इज नॉट अ लॉट दैट द लैंडलॉर्ड कैन डू। एनीथिंग दैट द लैंडलॉर्ड वुड डू इन दैट सिचुएशन वुड गो थ्रू द लीगल सिस्टम। ही हैज टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू, वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ बोथ पार्टीज। इसलिए लैंडलॉर्ड्स आर हेजिटेंट टू गिव आउट हाउसेस टू स्टूडेंट्स। यहाँ पे यूजुअली 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो दे विल आस्क यू upfront rent for the first 6 months, or they might ask you to provide a guarantor. Now, who a guarantor is? A guarantor is a person who is living in the UK on a British passport or is a skilled worker in the UK, has a skilled worker BRP. If you have someone like that who can provide guarantee for you, they just have to fill a form with their bank details just in case कि कल को आप rent ना pay करो तो guarantor को पकड़े owner. But a lot of people don't have guarantors also in the UK, and that's why finding accommodation for students in the UK is pretty difficult. Some landlords will ask you for 6 months upfront rent as well as a guarantor. तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? So what I did was, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन है तो go for it. शुरू के 6 महीने being in a university accommodation is going to be the easiest way to figure out the city, and then you can make friends and shift with them in the next 6 months when you understand how the city works. दूसरा चीज़ जो मैंने किया था was that I reached out to a lot of student accommodation companies. There are a lot of them, but the best one that I found was Amber Student. When I reached out to Amber Student, these guys were super sweet. They helped me out in every way possible. But the thing was, मैं January intake था and most of their accommodations had gone in the September intake. So they have pretty good accommodations and they go out like that. Now the good thing about staying in a student accommodation like Amber Student is that you get a lot of facilities. There's a common area, there are games, and you get to meet a lot of people from other countries and other walks of life, and it helps you network in London. And to find a job in London or to succeed in London, one of the biggest thing that you have to do is network with people. When you guys asked me to make an accommodation video, I reached out to Amber Student and asked them if I could shoot in their property and show them what student accommodation looks like. So we are in the works of that. We're talking with Amber Student and hopefully you should see that video very soon. But these guys were super sweet. They gave me a link. I have put the link down in the description below. If you use that link and make a booking through Amber Student, you might get some discounts on your properties and you will also help the channel while doing that. So check it out, and if you like it, do let me know in the comments below. So now we're going to the next location.
You see this lake, there's a road in front of this lake. If you follow this road straight and keep following it, you're going to reach the residence of the monarch of London, which is King Charles, and let's reach there. So behind me is the official residence of the King of the United Kingdom, King Charles. Welcome to Buckingham Palace. This is one of the most famous tourist attractions in London. A lot of tourists here. If you look behind, there's like a lot of people. It's full of tourists. And you can also find the Queen's Guards here. Queen's Guards are the people in red dresses with furry hats. जिनके साथ बकचोदी करते हैं लोग, करनी नहीं चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं. बट यहाँ पे शाम को there is a change of guards also. It's a full-on ceremony. Check this place out. भाई यहाँ पे एक तो मैंने अच्छी फ्रेमिंग करके अच्छे शॉट्स दिखा दिए, बट wherever there are tourists, there's a lot of gandagi, as you can see in these pictures, and it just hurts to see a really nice place spoiled by tourists. दूसरों के देश में तो क्या, अपने देश में भी मत करो. This is one thing that bothered me in India also, that people just used to throw trash on the road. अपना बहुत सुंदर देश है यार, बस लोग गंदगी करना बंद कर दें तो सब है अपने देश में. और बाहर आओ तो बिल्कुल ही मत करो. लोग सोचते हैं हिंदुस्तान से लोग आते हैं गंदगी मचाते हैं, अपने देश का नाम खराब होता है. तो एक और चीज़ दैट I'd like to mention is that there is a lot of theft and knife crime here. अगर आप ऐसी टूरिस्टी स्पॉट्स में जाओगे तो प्लीज़ ध्यान रखना अपने सामान का. पिक पॉकेटिंग हो सकती है, फ़ोन चोरी करके भागना बहुत कॉमन है. अगर आप रोड पे भी चल रहे हो तो इवन इफ़ यू आर टेक्सटिंग, लुकिंग डाउन एट योर फोन, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. क्योंकि लोग स्कूटर को मोपेड बोलते हैं यहाँ पे. लोग मोपेड पे आते हैं और आपका फ़ोन छीन के चले जाते हैं. तो जस्ट बी वेरी केयरफुल. व्हेन आई एम ऑल्सो शूटिंग, आई एम होल्डिंग माई फ़ोन वेरी टाइटली. एंड रात को अगर आप निकलोगे तो कुछ एरियाज हैं लंदन के जहाँ आप निकलना अवॉइड करो. अ लॉट ऑफ स्टैबिंग्स हैपन. मोस्टली इमिग्रेंट्स होते हैं जिनके साथ ये होता है. आपको चाकू मार के आपको लूट के चले जाएंगे. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है. इतना ज़्यादा भी नहीं है. इट्स स्टिल अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री. लकीली आई हैवंट फेस्ड इट एवर. जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड यू शुड बी गुड. So welcome to the next location. It's a square in the center of London. अभी यहाँ construction चल रहा है, as you can see behind me. But usually it's packed with people. Buskers, activities happening. मेरे पीछे है National Art Gallery और इस तरफ मेरे पीछे है Embassy of Punjab. मजाक कर रहा हूँ, कनाडा की एम्बेसी. तो अभी हम जा रहे हैं लंदन की अगली लोकेशन पे, which is the most famous and most iconic place in London. आप उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. Every London picture you see, you've seen that. It has become synonymous to London. And you think about London, you think about this place, and let's check that out. Welcome to the next location, which is one of the most iconic places in London. You would have figured it out only. Behind me is the London Eye, and this side behind me is the Big Ben with the House of Commons. लंदन जाए वाली साइड पे there's a whole lane with a whole market, a lot of food places, there's National Theatre. उस डायरेक्शन में अगर आप मेरे पीछे वाली डायरेक्शन में चलोगे तो टावर ब्रिज और लंदन ब्रिज आ जाएगा. ये नीचे आप देख सकते हो there are cruises going on. तो यहाँ पे ऊबर भी चलती है. ऊबर बोट is a thing in London. You can make a booking. I think £10 की टिकट होती है and it takes you on a trail of London. So let's explore this area. So behind me, you can see this entire road, and on this side as well. It is full of places to eat, a lot of things to do. Sometimes there are live music, a lot of events happen here. So it's a good place to explore, right along the banks of River Thames. Okay, so behind me, as you can see on this side, is the National Theatre. And if you keep walking straight on this road, you will reach London Bridge and the Tower Bridge and the Tower of London. चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, which is London Bridge and Tower Bridge. इसके लिए लेनी पड़ेगी बस. Welcome to the next location here in London. Behind me is the Tower Bridge.
यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कंसिडरिंग दिस एज लंदन ब्रिज, क्योंकि दिस इज वे मोर मैग्निफिसेंट. लंदन ब्रिज इज एक्चुअली वो पीछे अगर आपको दिख रहा है इज लंदन ब्रिज. इट्स अ सिंपल ब्रिज, इट्स नॉट एज मैग्निफिसेंट एज टावर ब्रिज, तो इसलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. बट दिस इज द टावर ब्रिज. इसके अंदर एक म्यूजियम भी है, उसका टिकट है शायद, बट यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. So if you look behind me, that is the entrance of the museum for Tower Bridge, and I'll just show you the line. पीछे तक लाइन जा रही है, वहाँ पीछे तक लाइन जा रही है. Probably इसी वजह से I haven't been to these places because it's packed with tourists. Probably winter is a better time. इस साइड पे अगर आप देखोगे मेरे पीछे is the Tower of London. Tower of London की बहुत पुरानी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक्जॉटिक एनिमल्स को रखा जाता था वहाँ पे, एलिफेंट्स, लायंस, टाइगर्स, जो गिफ्ट मिलते थे टू द मोनार्क्स ऑफ यूके. इनको ना संभालना आता था उन जानवरों को, ना उनकी केयर करनी आती थी, और ना कोई जू था यहाँ पे. तो टावर ऑफ लंदन बिकेम द प्लेस वेयर दे यूज्ड टू हाउस दीज एनिमल्स. आप लोग मेरे को देख रहे होंगे घूमते हुए लंदन. तो देयर इज दिस ऐप कॉल्ड Citymapper. या मैं अपनी पिछली वीडियो में बताना भूल गया था. यू शुड डाउनलोड दैट ऐप. लंदन में क्या है, यहाँ पे आपको कहीं भी जाना है या तो जगह का नाम पता होना चाहिए, जैसे टावर ऑफ लंदन, टावर ब्रिज, या तो डायरेक्टली Citymapper पे वो डाल दो, या अगर आपको किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है तो हर एड्रेस का यहाँ पिन कोड होता है. पिन कोड इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस टू दी एड्रेस. तो आप अगर आपको पिन कोड पता है और आप Citymapper पे पिन कोड डालते हो तो इट विल डायरेक्टली टेक यू टू दी एग्जैक्ट प्लेस वेयर द हाउसेस. तो घर वगैरह ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है. एंड इट विल ऑल्सो टेल यू द बेस्ट वे टू रीच दैट एड्रेस. इट शोज ऑल द ऑप्शंस फॉर ऑल द ट्यूब लाइन्स दैट यू कैन टेक और द बसेस दैट यू कैन टेक. एंड इट ऑल्सो टेल यू द प्राइसेस दैट यू आर गोइंग टू इनकर. अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे और उसके लिए हमें पकड़नी है ट्यूब. So behind me, as you can see, this is the Oxford Street. The closest station is Oxford Circus. यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग का सीन है. Every big band is available here. A lot of buskers also here. Saturday, Sunday को तो full pack होता है, Friday को भी. Welcome to SOHO. This is near Oxford Circus. Behind me is the Blues Bar. This is one of my favorite places. Most of the weekends I come to the Blues Bar. On this side behind me is Dishoom. Dishoom is one of the most popular Indian restaurants in London. और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है. You're lucky if you get in. और लाइन में they serve you tea while you're waiting. So that is a good thing. It is kind of expensive. I went with a friend once. We had like a chaat. We had a main course with 2 naans. We had a couple of non-alcoholic drinks और हमारा बिल आया था 70 पाउंड. तो मतलब 35 पाउंड, 3,500 रुपये खाने का बिल हो गया था. बट इंडियन फूड इज़ एक्सपेंसिव और तो एक बार तो ट्राई कर ही सकते हो. मस्ट ट्राई है, अच्छा खाना था, नॉट बैड. वीकेंड पे तो दिस प्लेस इज कम्प्लीटली पैक्ड. पार्टी करनी होगी कभी वीकेंड पे तो आना, रात तक चलती है. तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया तो शायद इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं. अभी मुझे व्यूइंग के लिए जाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने व्यूइंग कैसे ली और व्यूइंग का सिस्टम कैसे चलता है और घर कैसे मिलता है. I hope you had fun roaming around London with me. If you have any questions for me, you can put it down in the comments below, or you can DM me on Instagram at Mir495. I'm always replying and I'm always happy to help. Don't forget to subscribe to the channel and like the video because that would help me a lot. And thank you all for all the love and support that you gave me in the previous video. Means a lot. And I'll see you guys in the next video. Chalo, bye.